Hello, YouTube family. We are back again in like 3 days of time. And guess what? We have a new person. Our family has grown by one, and it's Pratyush from Hyderabad. And rest तो आप सब जानते हैं. I mean, one is Priyansh. Oh, United Unleashed. थोड़ा हाय हेलो कर दो. अरे हेलो टू एवरीवन। और दूसरा बहुत है जल्दी रेड स्ट्रीम लाइन. हो गया है अनएक्सपेक्टेडली। And Red Lion FC. This is Aditya from Nagpur, the same city where I am from. And and today's topic, it is really a wild one because somehow, for the third time this season, Manchester United are on a three-game winning streak. They have never won four on the trot this season. Oh, just look at that. Just look at Pratyush's face. You know that smack on his head. He's already decided that United are gonna lose Only today. treading the rhythm, man. This doesn't bode well for us. Records are meant to be broken, like it said. So that's Yeah. why we are Eras breaking do this come to an record. end. Eras do come to an end. Yeah, and our era of 3 unbeaten games will come to an end. Yeah, we'll finally go win the fourth one because for the previous three times we lost the fourth one. So this time we are going to win the fourth one. Okay, let's start. That was a very uncanny win that Depends we who's our have goalkeeper against. tonight. Huh? That depends on who our goalkeeper is tonight. Okay, just because we are talking about goalkeeper and Pratyush is a new joinee, I would just give floor to Pratyush. Like he can start and take away this discussion. Like what he thinks of today's match and what he predicts should be the lineup today. Yeah, I think Wolves is a dangerous team, right? I mean, it's easy to underestimate them. What are they in the table? Mid-table or are they at the top? Where are they in the table right now? I guess they're 11th at this point. Yeah, so Mid-table. okay. If So, they win, they will come above Chelsea. That's for sure. yeah, so Yes. I think Wolves is a good team. I mean, United is also a mid-table team, so they can beat us. Uh, and yeah, I think it depends. If On Wolves win, just for your information, everyone, if Wolves win, they are gonna be on same points as us. As I told you above Chelsea. and I was about to say, are we playing home or away? But it really doesn't matter with this team whether you play home or away. Nah, the disappointment, the disappointment. We Even can the whole hear, match was a scrappy win for us last time this yeah, season the, against the Wolves. pain, the pain in Pratyush's voice can be, felt by all the listeners See, right now. you know how I describe myself as a United fan when I meet new people. Right? They ask me, "Hey, who do you support?" I'm like, "Hey, I support Manchester United." And before they can meme me, I respond saying, "I know, I'm dead inside." It's been 7 years now. Yeah, since you are wearing a Roger Federer T-shirt, we are also dead because Novak has overtaken us, Nadal has overtaken our idol. So Don't get me. another dead piece inside. But let's come back to Manchester United. And my next Yeah. question is, I'm gonna shoot to Aditya first. What about the goalkeeper situation? Do you think Onana is gonna start or Bayendra gets another game? See, to be honest, I'd love to see Bindir again because the poor guy has barely played a game and that too against a fourth division team. But in that match, we saw that he's still not ready that much. But usko utna time bhi nahi mila, so can't say much. But I'd still start Onana only because जैसा मैंने बोला कि बाइंदीर को अभी तक उतना टेस्ट किया नहीं एंड Right. the way Ten Hag works, we all know it's going to be Onana only on the goal. Who's going to be the goalkeeper? Doesn't matter कि वो कल रात में लैंड हुआ है, कभी भी हुआ हो, या मैच के 10 मिनट पहले लैंड हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता. तो ओनाना ही स्टार्ट करेगा, कुछ भी कर लो. बट ये टेनहाग की ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती. His favoritism with players. He had chances in the Carabao Cup, in the early matches during the FA Cup where he could have tested Bindir. But yeah, I'd love to see Bindir again. I'd love to see him make his Premier League debut. But Onana, to be honest. Okay. Just Yeah, on just hold. I don't think after what we saw in the last game, Binder will start again. Because there were too many close calls when Newport players were pressing on him and मेरे को लगा ये तो हो गया.
पक्का मार By देगा ऐसे अंदर ये गोल. League Two team, Newport is a League Two team. Like, come on, man. Like, Exactly. And there was too many close calls there, so it just shows कि he's still yeah. not ready. But you can't really blame him much क्योंकि उसको उतना No, खेलने को ही नहीं मिला अभी तक. it's also that Uh, Binder is a backup goalkeeper, right? Like, you Exactly, can't trust him exactly. a lot. And So, if you see his compilation also on YouTube ना, he has done mistakes the same way Onana does. हाथ से बॉल निकल रहा है पीछे, दूसरे प्लेयर अपने ऑपोजिशन प्लेयर की तरफ बॉल मार रहा है, तो he has done the Oh, same that is things a true only. backup, na? That is a true Yeah, backup. exactly. That is a true backup. okay, now I just hold on to that thought, and I would just ask Priyansh to actually speak on this goalkeeper situation. Or do you feel, Priyansh, or let's put it this way, Priyansh, do you feel that the back four line that we all wanted from the start of the season, we have finally are gonna get that? And do you think from here on Onana's performances are gonna increase because he's gonna have players whom he can trust before him? What's your thought on that? Yeah, I hope his performance will improve, but there are 2 points on improvement. One is build up from the back, and one is saving the ball. So build up from the back can improve because you have Lisandro, you have Luke Shaw, then you have Kobe who can drop into the midfield. You have Varane and Dallo. But saving the shots you have to do that क्योंकि ओनाना के साथ अभी हमने यही देखा है कि वो पासिंग तो कर ले रहा है लेकिन जो मेन काम है कीपर का टू सेव द शॉट्स वो वहीं पे फंबल कर रहा है सबसे ज्यादा बहुत ही कम मैचेस ऐसे हुए हैं कि वो बॉल पे प्रेशर में आया हो इवन जब भी उसके पास बॉल होती है तो सामने वाली टीम के प्लेयर्स इतना प्रेस भी नहीं करते बिकॉज Right, दे नो कि ही विल बाईपास दैट प्रेस सो right, मेजर कंसर्न इज कि आइदर ये होता है कि हमारा बिल्डअप फ्रॉम द बैक ही इतना इंप्रूव हो जाए हम अगर गेम ही कंट्रोल करने लग जाए तो ओनाना को उतने शॉट ही फेस ना करने पड़े फर्स्ट थिंग इज दैट और right. अगर शॉट्स आ भी रहे हैं तो आपको वो सेव करने पड़ेंगे अनटिल अनलेस कि भाई कोई शॉट ऐसा ही है जो बिल्कुल ही अनसेवेबल है जैसे कि अब हालैंड है बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स से अपने फुल स्ट्रेंथ पे शॉट मार रहा है सो इट जाना इज था. वेरी हार्ड टू स्टॉप दैट शॉट तो nobody can save आई Haaland. फील कि Can you say it again because I was not able to hear it? I had some glitch in my Pratyush. No, I said nobody can save Haaland's shot. Yeah, दो ओनाना डिड मतलब वो सिटी वाले गेम में ओनाना काफी अच्छे शॉट्स रोके थे ओनाना ने उसके. कभी कभी भगवान अपना आगे दिखा देता है. हाँ वो भी है. It was his Acha. every dog has its day. This season Manchester United fans have been making fun of खुद के players. हम बहुत मजाक उड़ा रहे हैं हर एक प्लेयर का. When are we not? Even the क्या बोलते हैं मैनेजर का दिस सीजन तो हद ही पार कर दी बिकॉज हमने हर चीज में हर एक को कर्स करना चालू कर दिया है. पेशेंस हमने जीरो दिखाया है. बट दे डोंट अंडरस्टैंड this era of social media, change of style, a lot of players coming in, and then Aditya, when you talk about that favorism thing, it's okay. We might call it favorism, but also when you don't get the players, the type of players you want, आप जो अपने प्लेयर्स लाते हो ना आप टीम को दिखाना चाहते हो कि मेरे को ऐसे स्टाइल का फुटबॉल चाहिए. सो यू हैव टू प्ले दोज गाइज. बट अगेन हो क्या रहा है वो गाइज भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे. ना ओनर्स कम्स ऑन द मैनेजर बिकॉज ना वो इधर का है ना उधर का है. So that's where the fans have to understand, with all the injuries and all the shit that has gone from the top to bottom at the club, we have to just write off the season and just hope कि हम कम से कम भाई top 4 पहुंच जाए और FA Cup जीत जाए. Because that's how, and that will be the saving grace for Eric Ten Hag. And that is the next question that All off. I'm gonna put over here, put before you. Whom among you are Eric Ten Hag out or Eric Ten Hag in, and why? I mean, Okay. Who's gonna go first? कोई भी जाओ, कोई भी जाओ. आपसे स्टार्ट करता okay. है आदित्य भाई I am Ten Hag in for now. I mean, regardless of what happens this season, like I'm not putting any caveats in this season that hey, Ten Hag has to get us top 4 or top 5 or FA Cup win. We're not winning the FA Cup. Forget about it. But but no, my point is that this season has been a really like outlier season in a bad way, right?
we have had more than, we have had like an entire team of injured players all through the season. Uh, we got new players who, sure, we can argue maybe were not right for us, right? But I would say that right or wrong, we didn't even have the chance to kind of properly bed them in, right? Like if you see who all we got this season, Onana. I mean, sure, he has played almost every game, but let's Right. come back to Onana later. But look at others. Mount, he has been injured for what, 3, 4 months now? Like I don't remember the Right. last time he played. Right? Who Right. else? Amrabat. Where is he? Is he injured again? What's he doing? I mean, I don't know. He has basically disappeared off the face of this earth. Oh yeah, I think he played. He got red carded. He had a second yellow card and then got VAR gave him a red card after checking. But yeah, what was going on? But Right. Yeah. he was also out for some time. So I think like that's a problem, right? And our players who were first team players were out for a long time. Martinez only just came back. Varane was out. Shaw was out. Uh, Casemiro was out. Rashford might as well be out. You know, I think it's been a very, very weird season. Like if you see this first season with Ten Hag, he somehow like shit houses to fourth, man. Like that's not a easy achievement, right? Like remember when Mourinho said getting second with us was the greatest achievement of his career, right? Um, and for all the shit we gave Ole, he got a stop for twice in 2 consecutive Right. seasons. Right. So Exactly. I think for Ten Hag, I would say this season has been it's just been a write off, right? I mean, like there's nothing can be, I mean, this season has been completely crap. But given that we have a new, people in charge of the footballing, the footballing side, even though you don't have new owners, but we have new people in charge of the football side. We're getting some very, very capable executives, right? We got the guy from City. We're going to get a new DOF in the next few weeks, is expected. So I think the old United fan excuse, right? We need a full preseason. I think we need a full preseason of Eric Ten Hag with a competent management finally above him, who I mean, back him, but also not buy whatever crap he wants to buy from Ajax, but also kind of, have like a proper footballing strategy, get him his players that they think would work with Ten Hag, and then he can finally implement his tactics. Because we seen Ten Hag at Ajax, he was not like he didn't manage Ajax the Sir Alex Ferguson way, right? Where he did everything. He had Omas and all his other Van der Sar and all Even, other people even at Sir Ajax. Alex had David Gill with David him. Gill. Yeah, yeah. Like you said, Pratyush, like you said, when you have a good footballing, Yeah, structure above you, the finding talent and consultation becomes really easy. You know, right. I mean I would just give this chance to Priyansh, because he has been spot on with this every time when we discuss this. Priyansh, just take the floor and explain the situation that just Pratyush just said about all the signings and all just happened. I just want to hear from your mouth once again, and I would love that even our listeners do the same. So see, एट द करंट मोमेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है फुटबॉलिंग साइड पे, हमारा जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है या स्पोर्टिंग डायरेक्टर जॉन मर्टाओ, ही इज अ पर्सन फ्रॉम द फाइनेंशियल साइड, अकाउंटेंट बंदा है भाई, ठीक है। सो ही डजंट नो कि व्हाट इज प्लेयर प्रोफाइल या कौन किस बेसिस पे खेलता है, किधर कौन खेलेगा, उसको मतलब नहीं है। ही टेनैक, एज यू सेड कि आईएक्स में टेनैक ऐसे नहीं मैनेज करता था जैसे वो यूनाइटेड में कर रहा है, राइट? बिकॉज ओवर मार्स वहां पे सारी चीजें संभाल लेता था, उसने प्रोफाइल बोला। अब पीपल टेक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना आईएक्स का ही, लिसांड्रो मार्टिनेज यूनाइटेड में टेनैक की साइनिंग है बिकॉज टेनैक के अंडर वो खेला है, बट जब वो आईएक्स में आया था तब लिसांड्रो मार्टिनेज को तो नहीं जानता था ना वो। he came from the youth of the Latin America, right? So Ten Hag was a person who प्रोफाइल बताता था और ओवर मार उस पर स्काउटिंग करके उस प्रोफाइल के करेक्ट बंदे लाता था। अब यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे वो प्रोफाइल बोलेगा। प्रोफाइल जैसे जो लास्ट आर्टिकल हमने एथलेटिक का पढ़ा था, लॉरी विटवेल ने लिखा था कि ही आस्क्ड फॉर अ प्लेयर विद अ फ्रैंकी डियोंग प्रोफाइल, फ्रैंकी डियोंग मोल्ड। सो अब मोर्टाओ को समझ नहीं आया कि फ्रैंकी डियोंग मोल्ड का मतलब क्या है, उसको सिर्फ ये समझ आया कि फ्रैंकी डियोंग प्लेयर का नाम है, तो उससे बात करते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर दैट वाज गोइंग थ्रू यूनाइटेड। अब टेनैक को अगर अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? ही अंडरस्टूड दैट
कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर से तो कुछ होना नहीं है. लेट मी नेम द प्लेयर्स हु हैव प्लेड अंडर मी. सॉरी. हमको मिला एक बुड्ढा कैसेमीरो. सो बेसिकली क्या हुआ ना कि फिर टेनैक के ऊपर एक ही ऑप्शन बचता. उसने बोला कि अगर मुझे मेरा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, सो आई शुड साइन द प्लेयर्स हु हैव प्लेड अंडर मी, जो मेरा सिस्टम पहले से जानते हैं कि मैं किस तरीके से खेलना चाहता हूँ. अब प्रॉब्लम ये है कि टेनहैग के लिए इतना बड़ा क्लब, यूनाइटेड इज द बिगेस्ट क्लब ही इज बीइंग मैनेज्ड, और फिर प्रीमियर लीग में खेलना और फिर आपको यूरोप भी खेलना है विद टॉप क्वालिटी. अब उसने जो प्लेयर्स मैनेज किए अब तक, उसमें से बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी उस टॉप लेवल पे फुटबॉल खेल सकते हैं, लाइक जो यूनाइटेड के लिए या प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं. तो इसीलिए अब उसके सारे साइनिंग्स हमें एवरेज लग रहे हैं और उसकी टैलेंट आईडी एवरेज लग रही है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसकी टैलेंट आईडी एवरेज है, प्रॉब्लम ये है कि वो टैलेंट आईडी यहाँ पे उसके लिए एलिजिबल नहीं खेलने के लिए. वही वाला सीन. अब जैसे सिर्फ मार्टिनेज अभी तक की एक ऐसी साइनिंग है, आई थिंक मार्टिनेज जो सबसे बड़ी साइनिंग है टेनैक की, जो सबको पसंद है. Yes. एवरीवन वाज वेटिंग कि मार्टिनेज सबसे पहले आ जाए, बाकी लोग आए ना आए, क्योंकि हमारी बैकलाइन इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज वी हैव वरान, वी हैव मार्टिनेज. और लास्ट सीजन हमने वो एक स्टेबल जब बैकलाइन थी हमारी, तो हमने देखा था कि क्या हुआ था. इवन अभी आज भी जो टेनैक के कुछ इंटरव्यू के कोट्स आए थे, उसने यही बोला था कि वंस वी हैव अ स्टेबल बैक फोर, तो हमारा अटैक अपने आप क्लिक करेगा. Exactly. और एक और चीज मैं बोलूंगा, जो फेवरेटिज्म वाली बात है, हाँ मैं मानता हूँ कि टेनैक ने फेवरेटिज्म किया है. लाइक फॉर एग्जांपल एंटनी को हद से ज्यादा बैकिंग देना, या जैसे कैराबाओ कप के कुछ मैचेस थे, या जो कम ने वीकर अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेले, वहां पे आप बयनदेर को स्टार्ट दे सकते थे, बैकअप कीपर जो हमारा है. पर एक चीज जो लास्ट सीजन से आई थिंक आप सबने नोटिस की होगी कि टेनहैक को अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं है. वो पेप की तरह लाइनअप को रोटेट नहीं करता है. वो एक स्टेबल लाइनअप ज्यादा प्रेफर करता है खिलाना, रादर देन प्लेइंग डिफरेंट लाइनअप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. I mean, just to add to this मतलब thing, प्रियांश, वो ऑलमोस्ट हर मैनेजर को पसंद है कि मेरा कोर जो है 6-7 प्लेयर तो सेम ही रहेंगे. बट आप देखो प्रॉब्लम ना क्या होता है, टेनहैक के साथ तो बहुत ही रेयर है कि वो चेंजेस करता है. there is a reason for it, there is a reason for it. क्या हो रहा था लास्ट ईयर, जब वो हर प्लेयर को चांस दे रहा था, इवन द यंगस्टर्स. हम सब ने देखा कि उसने बहुत सारे गेम में गार्नाचो को स्टार्ट भी कराया था लास्ट सीजन, पेलेस्ट्री को भी किया था, बट दे कुड नॉट डू व्हाट दे वर डूइंग फ्रॉम द बेंच. एंड इन दोनों में से एक ही प्लेयर है एक्चुअली जो नेक्स्ट स्टेप ले पाया, गार्नाचो. नाउ द क्वेश्चन कम्स यहाँ पे कि पेलेस्ट्री को उसने चांसेस नहीं दिए. ऐसा नहीं है, उसने पेलेस्ट्री को चांसेस दिए हैं. उसने 20-20 मिनट भी खिलाया, 30-30 भी खिलाया, और लास्ट ईयर भी कुछ कप गेम्स में स्टार्ट दिया. ये सीजन भी उसने 2-3 गेम्स में स्टार्ट दिया बिकॉज ऑफ इंजरीज. बट पेलेस्ट्री कुड नॉट डू द थिंग गार्नाचो वाज डूइंग. इवन So- पहले से बायन वाले गेम में खेला था. हाँ. फर्स्ट टाइम So, लीग में खेला you वो. know, people just out of frustration, sometimes become hypocrite, जो मेरे को लगता है. I know, I might sound as if I am having a bias towards Ten Hag. Yes, I have a bias towards him because after a very long time, after Sir Alex, एक complete manager हमें मिला है, जिसको man management भी थोड़ा बहुत आता है, जो culture भी लाना चाहता है क्लब पे, and he wants performances. आप भले जीत रहे हो, वो फिर भी बोलेगा नहीं, मेरी टीम ने इससे अच्छा करना था. When Sir And Alex also can said, develop the youth. हाँ, सॉरी टू कट यू. ये आई थिंक पहला मैनेजर है आफ्टर सर एलेक्स जिसको मैंने देखा है कि जो प्रेस में जैसे कुछ इनको मीडिया हाउसेस को इसने बैन कर दिया. ये पहला मैनेजर आफ्टर सर एलेक्स जिसको मैंने देखा ऐसा करते हुए. आई डोंट थिंक जोसे और ओले डिड इट. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही ला रहा था, जब जेडन सैंचो सिचुएशन और रैशफोर्ड सिचुएशन. आदित्य, मैं चाहूंगा कि यू टेक द लीड ऑन दिस बिकॉज सबने इंटरव्यू दोनों देखे, एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा अगेन टू द ट्विटर ब्लू फैमिली, भाई हमें भी समझता है, हम इंटरव्यू देखते हैं, देयर इज नो बायस. क्वेश्चन दोनों तरफ पूछे गए थे. फर्स्ट टाइम उसने बहुत नॉर्मल वे में आंसर दिया, और यही चीज पेप ने अपना कैल्विन फिलिप्स के लिए बोली, पॉच ने के लिए बोली है, आपका पोचेटिनो ने बोला है, आपका आर्टेटा ने अपने प्लेयर्स के लिए बोला है. आपने तो किसी ने अपना वो दिखाया नहीं इन सब मैनेजर्स के लिए. सिर्फ हमारे टेन हैग के लिए ही क्यों आ जाते हो? बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वो एसोसिएटेड है, इसलिए सॉरी. Exactly. और आदित्य, जस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन टू एवरीवन, एक बार सब समझ जाए कि हुआ क्या है दोनों केसेस. फर्स्टली सैंचो और रैशफोर्ड का जो दोनों केसेस है, देयर टू बी ऑनेस्ट क्वाइट डिफरेंट. पहली बात तो सैंचो को टेन हाग ने टाइम भी दिया, ही बैक्ड हिम, उसको नेदरलैंड्स भेजा गया सो दैट ही कैन फोकस ऑन हिज मेंटल हेल्थ अ बिट.
उसको लाया गया, he integrated back into the team, उसको इतने चांसेस मिले, still he didn't step up. एंड अब जब टेनहाग उसको उससे डिमांड कर रहा है कि यू नीड टू प्ले टू योर पोटेंशियल, तो वो सोशल मीडिया पे जाके ये सब चीजें डालने लग गया कि आई एम डूइंग वॉट एवर आई एम सपोज टू डू दिस एंड दैट. एंड रैशफोर्ड के केस में इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि उसने परफॉर्म तो किया लास्ट सीजन, ही वाज आवर टॉप गोल स्कोरर. बट रैशफोर्ड के केस में उसने, और रैशफोर्ड का सीन रहा ही है, 8 साल में यूनाइटेड में रहा है वो, एक सीजन करता है, एक सीजन नहीं करता है. एंड वो क्लबिंग गया, ये सब कर, एंड उसने लास्ट सीजन खेला भी इसलिए क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, सिंपल सी बात है. उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसको 350K पर वीक मिल गया, वो जा रहा है ऐश कर रहा है बैठ के वहां पर. तो रैशफोर्ड के केस में एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ये सब किया है. सो दीज आर टू डिफरेंट केसेस. सैंचो को टाइम दिया, सब किया, ही जो एज सेना सेड कि ही चोज टू गो पब्लिक, थिंग्स कैन बी डेल्ट विद इंटरनली इजीली. अब अगर रैशफोर्ड फिर भी आगे जाके फिर से ये चीज करता है तो ही विल डेफिनेटली बी शिफ्ट आउट, Right. जो कि आई वांट. Just, I just want to give 1 minute of floor to, Pratyush, because थोड़ा Rashford का उसको rant करने में मजा आएगा. He was willing to do it on the group, so I would just give him the stage right now. Everyone can just watch that rant for a minute. वेट अ मिनट, Pratyush, timer लगा रहा है? नहीं नहीं टाइमर नहीं लगा रहा मैं. थोड़ा और रैंटिंग अरे अच्छे से यार. होगी अगर ये सामने रहेगा तो, थोड़ी और रैंटिंग अच्छे से होगी तो बस. Your और time गुस्सा starts आएगा now. बाहर अभी. Your time starts now. It's not like that. See, I used to be a fan of Rashford, and I was very happy when Sancho also came to the club, right? Right. But I think the simple thing is, for example, the whole Sancho thing was happening. A lot of past media reports from when he was in the City youth setup, or when he was Dortmund came, when he was when he was studied at training, right? He was not focused, he was late, missing training and all that, and yet we still bought that player. And I think it just shows how dysfunctional the whole transfer and contract setup at the club is. Like same with Rashford, right? Like we have seen in Rashford's inconsistency for the last how many years it's been, right? It's like Mourinho के टाइम से हम देख रहे हैं कि वो 6 महीना खेलेगा और 6 महीना सोएगा, right? But like even last season, he didn't play well the entirety of last season. It was like a stretch of 4 or 5 months. He would score a goal a game, right? And if you see, he signed the contract when Jan, Feb or something around that time. उसके बाद फिर से वो सो गया, right? Yeah, I think Rashford, see, both Sancho and Rashford, both are rumored to be on what, 350K a week, right? Right. So I think that's the problem. I mean, they've made the bag. They have the job security, right? I mean, 350K a week is, I don't know what, 20, 30 million UK Kada tax income is still like 15 million a year. They've made their bag. They don't give a shit anymore. I mean, Sancho is another 2 years left on his contract? Rashford is Rashford time for 3 or 4 years? 4 years. So Sancho is like, I got 30 million already, I'll get another 30 million. Rashford is like, I'll get another 50 million in the next 4 years. I don't give a shit, right? So I think that's the problem, which I hope we saw, at least keeping Rashford aside, we saw that some contracts we have been more mindful, like in the past year. Bruno. Like it seemed that at least some people were trying to learn their lessons. I don't want to give too much credit, he's an idiot, but at least he tried. Right? Like, I didn't like how we handled De Gea, but sure. I mean, we tried to, reduce high contracts, high wages, right? I mean, our wage bill was completely out of control. To be honest, there was nothing to be done with De Gea. We asked him if you would, want to stay at 200,000 pounds a week, you can stay. First of all, The reporting actually, with the De Gea was he first signed time the it was contract and decided that he will be signing a new contract. There will be a Right. contract extension. Then Right. after the season got over, they tried to give him a new contract with a lower wages. So, and then Ten Hag said that I don't want the Ten keeper. So Hag, that was a messy situation. Either it's it would fine. have been that
The writing was already on the wall. Everybody knew Yeah. De Gea was not the goalkeeper that Ten Hag ना wanted. that is true. And Actually the thing is कि situation थोड़ी better handle हो सकती थी कि ठीक आप है उसको यार, पहले ही बोल देते कि it will be our last season The thing and is, I just hope that with the new management, Jim and all these people, we stop giving such contracts. Like Rashford, yes, he had a good run of form last year, but did he deserve a 4-year extension at 350k a week? I think even the see, biggest Rashford see, fan uh, would agree yeah, that that's Ridiculous. we can say that the wage was not good, but a 4-year extension was needed. Because if you look at the last 8 years, he has been the only consistent performer and goal scorer for us. People might not agree. He had have start-stop seasons every no, alternate I season. agree. To be But honest, the thing is that it felt like we only gave him 350k because we're scared that PSG will offer him no, 400, so no, we need to no. offer him some PSG, comparable. PSG, PSG offered him more than what you were giving. To be honest, he rejected it. He rejected it. See, thing is, what people have, what I have seen, well, I have understood for the past 2 or 3 years playing FIFA. People think that our wingers should keep on scoring 50, 60 goals a season, which is not possible. Because I guess in the last video I did show Nani's stat to everyone. He played almost 200 games for United, had 41 goals and 70 assists. So are you gonna bash Nani for scoring only 40 goals? Because he was as similar scoring as similar rate as Rashford is doing. No, but I think also a lot of people this season that the problem they have with Rashford is the lack of effort on the pitch, Eh, like Bakhtar, right? I agree to it. I agree to it. But प्रत्युष आप पूरी टीम देखो. स्टार्टिंग से जो टीम के साथ हुआ है, जो Yeah, fans मेंटल hate the entire team. It's not just जो Rashford, मेंटल जो मेंटल आप बोलते हो ना, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है ये टीम में. एंड दैट्स व्हाई right? वी हैव नॉट बीन विनिंग कप्स. अंडर ओले हम 3 फाइनल खेले यार. हम तीनों हारे. क्यों? बिकॉज हमारे पास वो मेंटल फिटनेस था ही नहीं कि फाइनल को जीतना कैसे है. हमें से पहुंचना आता था. हम वहां जाके हार जाते थे. जीतते हुए Yeah. सिचुएशन से हारते थे. So it mental toughness and all these are also taken into account, but people don't consider it. No, I think I no. I mean, coming to your point about mental fitness, right? I think also the thing there is that, like what Priyansh was saying earlier, right? That Ten Hag doesn't rotate, right? But if you see the last few managers, right? Ten Hag, Ole, Jose, nobody rotated, right? yeah, And I think the yeah, simple reason is that they didn't find anybody on the quality. bench worth rotating for, right? You know, just to add Like, facts to it, people were bashing United for letting go of Angel Gomez. Where is he now? Where is he? People were shouting like, हमने एंगल गोमेज जनरेशनल टैलेंट छोड़ दिया. भाई कहाँ है? लीग वन के सड़े से टीम में. वो पीएसजी भी नहीं कर पाया अभी तक. नहीं तो पीएसजी नहीं उसको ले लेती अभी तक. हाँ तो जोसे no, मोरिनो what ऑलरेडी you're थे saying, ना कि what you're उसने saying मोरिनो is बोला था. we keep saying, Ten Hag is not rotating, Solskjaer is not rotating. But the point was we never had a bench to begin with, right? And that again comes That's down to that's what I'm saying. that That's again what I'm comes saying. down to the recruitment strategy of the Glazers or whoever Yeah, runs the show, yeah, right? exactly, Like exactly. say Pep rotates, but Pep को देखो यार, फोर्डन नहीं खेला तो आएगा बर्नार्डो सिल्वा, right? हालैंड उसका बेंच इज 500 मिलियन बॉस. हमारा बेंच तो 100 मिलियन का भी नहीं होता है. उसका बेंच इज वर्थ 500 मिलियन. लोग ये भूल जाते हमारा हैं. बेंच ही कहाँ होता है. spent 5 हाँ, million on arbiters, so we just scrapped. just I mean quality wise, like you said, केडीबी नहीं खेल रहा तो बर्नार्डो सिल्वा है. बर्नार्डो सिल्वा नहीं खेल रहा, भाई मेरे पास जैक ग्रीलिश है. उसके पहले जैक ग्रीलिश नहीं था तो रियाद माहरेज था. सो ही हैड ऑप्शंस. हमारे पास क्या Yeah. है? ब्रूनो आउट हुआ तो हमारे पास कोई है नहीं खेलने मैक्टोमिने के लिए. His third team is our first team. Yeah, exactly. भाई वो कल उसका लिवरपूल का जो 21 ईयर कॉनर ब्रैडली. हाँ, भाई Conor Bradley. कॉनर ब्रैडली he has more goals and assists than Bruno. भाई ये क्या हो गया? अब भाई तो वो लोग ब्रूनो को भी बोलने लग गए कि ब्रूनो बेकार है. उन्होंने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का क्लोन बना दिया भाई एक और. So, वो at least भागता है यार. anyway, coming back to the very hot topic, एक और मेरे को जो टॉपिक पे डिस्कस करना है कि if somehow Ineos sacks Eric Ten Hag, who should be the next coach? Because अभी तो डी जर्बी वाले लोग शांति हो जाए, बिकॉज बंदा से 3 गेम जीता है 16 मैचेस में, तो वो तो हमारे लेवल से भी गया भी तो हो गया. वो हो गया ना शांत अपने आप. वो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का. पहली बात तो
उससे नहीं होगा भाई प्रेशर तो कोई सा ही मैनेजर नहीं हैंडल कर पाया, इस बेसिस पे हमारा फैन बेस चलता है। Who beat Brighton last night for love? अरे मतलब आप वो देखो ना, अभी अगर एक मैं सिर्फ एक इंटरव्यू, आई विल टेक अ रेफरेंस, अभी जावी ने जब रिजाइन किया था तो उससे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि विल देयर बी एवर अ मैनेजर लाइक सर एलेक्स फर्ग्यूसन एट बार्सिलोना, तो उसने ये बोला कि कभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग और फैन बेस कभी टिकने नहीं देगा किसी मैनेजर को। इट इज ट्रू फॉर यूनाइटेड एज वेल। Exactly. And guess what? And guess what? 2 days back, I was slandered on the group because मैंने फैंस पे क्वेश्चन उठाया। मैंने ये बोला फैंस पेशेंस नहीं दिखाते, इसलिए सब वही हाल तो होता प्रॉब्लम है, वही तो और प्रॉब्लम है। और मेरे को गाली दी गई थी कि यू बिन एवरीथिंग ऑन फैंस। मैंने बोला भाई प्रेशर तो तुम ही डालते हो। ग्रीनवुड सिचुएशन क्या था? फैंस ही था ना, वो तो आ रहा था एग्जैक्टली चुपचाप। फैंस ही था। फैंस ने बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भैया बाहर हो गया। एडम क्राफ्टन ने डाल दिया वो पहले की हाँ हाँ भैया हम तो ला रहे, ग्रीनवुड को बोला हुआ है, खत्म हो गया। ऐसा है। So you know, social media plays a lot. All the gestures done by Rashford and Anthony like this, दिखता है भाई कि वो लोग पढ़ रहे हैं, it is affecting their mental health. थोड़ा समझो, they are human beings, not robots। जो तुम्हारे फीफा पे रैशफोर्ड और एंटनी भागते हैं 99 की स्पीड से, वो नहीं होता भैया रियल लाइफ में, तो नहीं होता, समझा करो। हर कोई साका और सलाह नहीं होता कि 40 शॉट में 25 गोल मारेंगे, बट हमारा होलुंड जरूर है भाई साहब को 20 शॉट मिले 8 गोल मार चुका है अभी तक, गुड रन रेट पे चल रहा है, गुड रन रेट पे चल रहा है। मिले नहीं है उसे 20 शॉट, उसने बनाए उसमें से आधे से खुद ज्यादा। बनाए बेचारे ने, बहुत बड़ी बात दिल है। से तो ज्यादा होता। अच्छा अच्छा, हमने I डीजर feel भी for Hojlund, man. डीजर I feel nobody the team trusts Hojlund. You see him so many times. He'll make the run, पर चूतिया पास नहीं करता उसको। there is only he'll one man, make a thicker run towards the goal and be like, pass करो, pass करो, pass करो। And there is only one person who passes to him, और वो भी बेचारा डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण पिछला गेम नहीं खेला, रैशफोर्ड। Dude, Rashford doesn't pass, man. Come on, Rashford is just running to the defender. भाई वहां पे वो टॉटनम ऑफ वाले गेम में हॉलैंड का वो जो स्ट्राइक हुआ था, इतना जोर से मारा था, उसमें मैंने ट्विटर में देखा पीपल वर गोइंग कि रैशफोर्ड एंड हॉलैंड लिंकिंग अप। मैं बोला अबे सालो लिंक अप नहीं है, उसके पैर से बॉल फिसल के हॉलैंड के सामने आ गया था। अरे वो नहीं है। The 3 assists that Hojlund has got, 2 are from Rashford, 1 is from another player। और Rashford ने चैंपियंस लीग गेम्स में और ऑल्सो प्रीमियर लीग गेम्स में बहुत बार उसको पास दिया है, भले ही इट हैज नॉट बीन एक्यूरेट, बट फाइनली हमने देखा कि दो तो भाई, एक तो प्लेयर है जो समझता है कि हॉलैंड भागेगा कहाँ, बाकी को तो समझता ही नहीं वो कहाँ जाएगा। वही तो। Anyway, coming back to the previous question, और हमने डीजर्बी को तो हटा दिया भाई, अगला मैनेजर कौन? जोजे मरीनो? Who wants Oh, Jose please, Mourinho? no, God, no. भाई प्रियांश का चेहरा देख, बोले मैं सो जाऊंगा मार दूंगा, बोले जोजे मरीनो नहीं चाहिए। देखो, एज मच एज आई रिस्पेक्ट जोजे, भाई उसने जो भी किया अपने करियर में सब जीता उसने, वो भी उन टीम्स के साथ जैसे पेप जैसी टीम्स नहीं रही उसके पास कि भाई उसने दुनिया भर का पैसे वाले क्लब्स के पास गया और उसने टीम्स पैसा खर्च करके बनाई हो। ही हैज टेकन अप द चैलेंज इन डिफरेंट क्लब्स। भाई पोर्टो के साथ चैंपियंस लीग जीती, इंटर मिलान के साथ ट्रेवल जीता, ही वॉन एवरी ट्रॉफी। ठीक है, हमको भी लास्ट यूरोपियन ट्रॉफी उसी ने जिताई थी। ठीक है, सो एवरीथिंग इज राइट, बट अब नहीं, 2024 में नहीं। अच्छा 2024 में आई वोंट आदित्य, एग्री विद जोसे बीइंग द मैनेजर। तुम दोनों ही बता दो कौन मैनेजर आना चाहिए फॉर एरिक टेन हाग इज सैक्ड। I'll let Aditya go first. ओके आदित्य बोल भाई। टू बी ऑनेस्ट इवन आई डोंट नो। मैं तो बोलता हूँ ओले को वापस ले आओ। भाई तू भी सबसे पहले ओले आउट ही रहेगा, मैं गारंटी बोलता हूँ। मेरे को सीरियसली मालूम नहीं। हुल मेरे दिमाग में इस समय टेन हाग ही है। मैं सीरियसली आई हैव नॉट सीन बियॉन्ड टेन हाग राइट नाउ। ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि देखो एक तो पहली बात मार्केट में, एक तो ये समर जो होगा ना, ये वैसे प्लेयर से ज्यादा मैनेजर सेंट्रिक रहेगा स्टार्टिंग में। वही क्योंकि अगर आपको कोई मैनेजर चाहिए भी ना, अगर आपको डिसाइड करना है कि हमें मैनेजर चेंज करना है, so you have to contact the managers by March and April, because May end के बाद से तो इतने सारे क्लब्स मैनेजर्स के पीछे रहेंगे ना। लिवरपूल विल बी देयर, बायर्न विल बी देयर, देन बार्सिलोना विल बी देयर, बार्सिलोना, multiple big clubs will be there, so डॉर्टमंड विल बी देयर। अगर जाबी अलोंसो बायर्न या यहाँ जाता है तो डॉर्टमंड खाली हो जाता है। डॉर्टमंड नहीं, लेवरकुसन सॉरी डॉर्टमंड नहीं, लेवरकुसन। सो ऑब्वियसली मतलब काफी सारे मैनेजर चेंजेस होने वाले हैं इस समर में। सो पहले तो ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि देखो
जिडेन तो आएगा नहीं, नहीं ईपीएल में आएगा ही नहीं, किसी भी टीम में I नहीं don't आएगा think जिडान। it's the right choice for us. I don't think Zidane is the right choice for us. एग्जैक्टली नहीं, even not a right choice, he won't come to a club which doesn't have a settled system. कोई राइट भी अभी इस जॉब को नहीं लेगा। सेकंड थिंग, आप जिडान को हटा दोगे फिर कौन बचता? हांसी फ्लिक बचता है एक, उसके अलावा जर्मन बॉस और उसके कॉन्टे अलावा और कौन सा? Nagelsmann. कॉन्टे 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 तो भैया नहीं। By the way, there are murmurs of Nagelsmann joining Barcelona. You know, देखते हैं क्या होगा। आई it, डोंट थिंक कि होगा that वो। would आई be, डोंट थिंक होगा नहीं। that would be a perfect situation because Nagelsmann versus Carlo Ancelotti. Oh, मजा आने वाला है. The kind of talent Barcelona has. अभी तो Previous जर्मन नेशनल टीम का है ना वो तो कोच इस समय। अभी Yeah, यूरोस yeah. तक तो उन्हीं का ही छोड़ है। दे यूरो यू तक तो नेवर नो है कि वो, उसके यूरो तक बाद तो है वो। उसके बाद छोड़ He'll leave the post. उसके बाद छोड़ देगा वो I mean, Germany is निकाल not ही doing देगा. it. यार Very आई बहुत much. टू सारे बी ऑनेस्ट हैव अ फीलिंग, कि क्लॉप जाएगा ना जर्मन नेशनल टीम को आफ्टर द यूरोस प्रोबब्ली। आई डोंट नो व्हेन। आई हो डोंट, सकता है मेरे को लगता है हो सकता है. या तो जर्मन नेशनल टीम लेगा या फिर Oh, क्रॉप by एक the साल way, का ब्रेक लेगा by the way, और अगले by the साल way, हाँ एक और ब्रेकिंग मड्रिड न्यूज कैन दूं साइन। आपको. एक और ब्रेकिंग न्यूज दूं. लास्ट समर रियल मैड्रिड ने एरिक टेन हाग से बात की थी. एरिक टेन हाग ने ना बोला था, बट बार्सिलोना ने अभी एरिक टेन हाग को फोन किया है कि ये समर में अगर तुम्हारा होता है यूनाइटेड से जाना तो कम टू अस. So एक this is also ए- might be a tight slap to the people who said sack Eric Ten Hag. एक गड्ढे से Uh, दूसरे गड्ढे में कूदेंगे और क्या होगा भाई। ऐसा नहीं है. okay, उसको we will say उसको that. उसको जो वो चाहिए ना, वर्किंग फ्रॉम द बैक, पासिंग फ्रॉम द बैक वाली टीम, वो एक्चुअली बार्सिलोना है. तो इट हाँ वुड वो है, वर्क वो तो वंडर्स है, फॉर. बस वो उसके तो पास है तो वहाँ पर। प्ले. रेडी है और फिर उसके बाद ला वो तो मासिया रेडी, बैठा है उनके उसको पास। मिल जाएंगे प्लेयर। उसको वही बोल फ्रैंकी रहा हूँ. डियोंग मिल जाएगा। डेयोंग उसके पास नहीं है, वो डेयोंग के पास जा रहा है। कुछ मिले ना मिले उसको फ्रैंकी डियोंग मिल जाएगा। But I think for me, manager, what Aditya said about Ole, I'm not completely against that because I still feel Ole for all is the vibes and all the thing we told him for. He still got us consistent results, right? He got us top four twice, and I think the only reason the Ole train went off the rails was because of getting Ronaldo. Ronaldo. Yes. I think that And there completely were, upset the balance yes. of the team. Maybe Sancho would have actually settled in if Ronaldo didn't come. I don't know. Yeah. Could have. But if not Ole, I mean, but I don't think Ole is coming back. I think that's not happening. No. But I would say, of course, I would say give Eric one more season. But if they really want him gone, I don't want Deserby. I don't want Graham Potter either. Like screw those people. गॉड, ग्राहम पॉटर. ग्राहम पॉटर है। I वो would ग्राहम really पॉटर है, हैरी पॉटर थोड़ा ही है कि यार जादू गिरी घुमाएगा। Ineos have actually Yeah, Ineos had a talked hard about on Graham for Graham Potter. हाँ, because अरे वो तो अभी तो नीस सारे में भी न्यूज चाहिए आएंगे था ना। उसको नीस में ग्राहम भी पॉटर चाहिए आ था. गया, ग्राहम यार पॉटर आने दिस से इज, पहले ही इनियोस और भी साल हो जाएंगे। मैं तो पहले से ही हूँ. मैं तो अब भी हूँ. पर मैं तो अब अभी भी आई ये डोंट, हूँ. आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, क्योंकि अभी तक ऐसा ही सुन, जो मैंने Ineos जितना पढ़ा है कि इट इज लाइक कि सीईओ जो होगा, ऑब्वियसली ओमार बरेरा विल बी सीईओ, और उसके बाद जो हमारा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल होगा ना, उन Yes. दोनों के साथ एक बार टेनेक की मीटिंग होगी। जब विजन अगर उन दोनों का तीनों का अलाइन कर रहा होगा तो आई डोंट थिंक वो सैक करेंगे उन्हें, बिकॉज Yeah. अगर डैन एशवर्थ अगर डीओएफ बनता है ना, so Dan Ashworth has a simple philosophy of having a stability with a single person in any club. Right. So I don't think कि अगर उनके विजन अलाइन होते हैं तो, और टेनेक को कोई Next. प्रॉब्लम नहीं होगा अगर प्रॉपर फुटबॉलिंग ब्रेन उसके ऊपर बैठे हैं ना, हाँ, उसको सिर्फ हाँ. प्रोफाइल बताना है Next. और वो सारा काम उनका है, उसका काम रहेगा कि प्लेयर्स को कोच करने का। नेक्स्ट मंथ वैसे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा. बाय मार्च हाँ हमें नेक्स्ट समझ में आ मंथ तक। जाएगा टेन हैग रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, और नहीं रुक रहा है तो Right. हमारे पूरे एल लगेंगे अच्छे तरीके से. वो मैं अरे जानता अगर Ten Hag नहीं रुक रहा ना, if you decide to let go of Ten Hag end of the season, I will say get Nagelsmann. जर्मनी तो जीतेगा नहीं यूरो, so he'll be हूँ. fired. नहीं आएगा वो. नहीं आएगा वो. देख ब्रो अगर कैसा बार्सिलोना नहीं रहा है तो Nagelsmann कहाँ जाएगा? ब्रो, बायर्न तो नहीं हमारे जाएगा. हमें पैसे स्पेंड करने हैं ब्रो. हमारे पास पैसा नहीं है. हम एफएफपी रेगुलेशन में अटके हुए हैं. फिर हम क्या करेंगे पता है? ब्रूनो बेचेंगे, रैशफोर्ड बेचेंगे, फिर हमारे पास अरे खेलने वो वाले लोग नहीं होंगे. देखो अभी Ineos अभी अच्छा अभी see मैं बताता हूँ. देयर आर हाँ. owners can invest 100 million into a club every year without falling a fall of FFP. Our owners never invested that.
But now the Right. new owners can invest, right? You have to take out the debt to do that. आप डेट हटाते तो आप 600 मिलियन 700 मिलियन कर सकते हो अभी. अभी कैसा है पता है, यू हैव टू सेल प्लेयर्स वर्थ 40 मिलियन तो आप 120 मिलियन के प्लेयर साइन कर सकते हो. ऐसा है. 40 मिलियन में कौन जाएगा? हमारे मैकटोमिने जा रहा था लास्ट सीजन, नहीं जाने दी, नहीं गया वो. मैगवायर भी जा रहा था 40 में. 240 मिलियन तो ऐसे मिल रहे थे फुकट के. हैरी केन तो ऐसे आ जाता. हमारा उनकी क्लब वैल्यू बढ़ा देना. अब उनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए अब तो. हाँ भाई, 51 मिलियन में मैं स्कॉट मैकटोमिने बेचूंगा. 49.3 मिलियन में मैगवायर बेचूंगा. दैट्स इट. ऐसा है. एनीवे, पर वही है कि एक और चीज मैं बोलूंगा बस लास्ट पॉइंट हाँ, कि हाँ. अगर कोई भी नया मैनेजर ले आओ फिर भी आपको उस मैनेजर को मिनिमम तीन सीजन तो देने पड़ेंगे. उसका रीजन ये है कि एग्जैक्टली. आपने टेनैक को लेके आए थे. टेनैक का ये दूसरा सीजन है, राइट? आपने फर्स्ट Right. सीजन में उसे कुछ प्लेयर्स दिए, सेकंड सीजन में उसे कुछ प्लेयर्स दिए. ठीक है, सारे प्लेयर्स काम नहीं किए, बट वो प्लेयर्स आए थे कि टेनैक का सिस्टम बिल्ड होगा, राइट? अब वो भी नहीं प्रॉब्लम हुआ. ये होगी अगर कोई दूसरा नया मैनेजर आता है, वो कहेगा कि भाई ये प्लेयर जो टेनैक ने साइन किया वो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेरी प्रोफाइल के प्लेयर्स चाहिए, मेरे गेम स्टाइल के. तो फिर आप उनको बेचना, फिर वापस से नया स्क्वाड बनाने में मिनिमम से मिनिमम 3 विंडोज लगती हैं. रीजन बिंग अभी हम सिर्फ समर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम विंटर में भी इन्वेस्ट करते तो आप उसको रिड्यूस करके वो 3 विंडोज डिवाइड हो जाती 1.5 सीजन में, कि आपने पहली समर विंडो, अगली विंटर विंडो और एक और समर विंडो में आपका मेजर स्क्वाड बन गया. प्लेयर्स को भी खिलवाते हैं और एक पे खिचड़ी बनाते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन टू एवरीवन. वुल्व्स वर्सेस यूनाइटेड का स्कोर लाइन क्या होने वाला है? स्टार्टिंग में प्रत्युष बोलो भैया. 1-1. वाह भाई, यानी रिकॉर्ड बरकरार ही रखना है. 3 विंस के बाद हम चौथा नहीं जीतेंगे. ठीक है. प्रियांश. 2-1 यूनाइटेड. आदित्य. 2-0 यूनाइटेड. नील मैं नहीं होगा. मैं नहीं, मैं नहीं 3-1 बोलूंगा. मैं 3-1 यूनाइटेड और हैट्रिक बाय हॉलैंड. भाई मजा. नहीं, I'd go with 2 goals by Hojlund और एक सरप्राइजिंग बंदा मारेगा गोल. ये लो. हाँ भाई, Concede हमारा तो होगा. सबसे अच्छा हमारा फैन है भैया ये. हाँ वो तो But- होगा ना. मैंने बोला ना 2-1 विनर तो उसी का ये है. तो रियलिटी बता रहे हो. Harry, McTominay we scoring. didn't win 3 on the trot. We didn't win 3 on the trot. We drew with Spurs, so we only won the last game. No, एक second. No, we are unbeaten on 3 on a trot, no? We are unbeaten 3 on the trot. We didn't win 3 on the trot. We didn't win 3 on a trot. Oh, right. I would also like to tell that we've scored less goals than Luton Town. हाँ, कुछ नहीं होता. सबको पता है. बता रहा हूँ मैं बस. हाँ भाई. देख कैसे दुखती नस पे हाथ नहीं रखने का. हर चीज नहीं बताते, कुछ चीजें अपने में अंदर रखते हैं. अच्छा नहीं लगता. Okay, so guys, that was it this time from us on this special United versus Wolves pre-game preview show, and I hope you enjoyed, you liked. So don't forget to subscribe the channel, don't forget to follow us on Instagram, don't forget to drop a message if you want to join just like Pratyush, because उसने किया तो वो आ गया. That's how this thing works. तुम्हें भी आना है, तुम भी आ जाओ. हम मना थोड़ी करते किसी को. हमने बनाया ये पेज इसके लिए, डिस्कशन करी इसके लिए रहे. एंड गाइस, जिसको जो बोलना है बोल सकता है. 1-1 मिनट का क्लोजिंग स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ नहीं भाई, ध्यान रखना लेट नाइट मैच है, यूनाइटेड है तो अपने रिस्क पे अगले अपने आने वाला रिस्क पूरा दिन खराब हो सकता है. अगर आपके एग्जाम्स हैं तो ना देखें, ऑफिस जाना है तो जरूर देखें. प्रत्युष वही डिलेमा में बोलूं तो बोलूं क्या बोले. बस नहीं यार, ड्रॉ भी लूंगा मैं अभी. बस हारो मत वुल्व्स को. पूरी रात खराब हो जाएगी अगर हार गए वुल्व्स से भी तो. अनिकेत सुबह के 5 बजे तक जाग के मैच देखेगा, समझ में आ गया. 7 बजे तक के सिंगापुर टाइम के हिसाब से. और ओनाना करेगा. इफ ओनाना गेट्स अ क्लीन शीट, अनिकेत इज गोना ट्रांसफर एवरीवन $100 इन देयर पेपाल अकाउंट. तो सब पेपाल नंबर अनिकेत को भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आदित्य, तू क्या बोल रहा था? मैं कुछ नहीं बोल रहा था. ओके, चलो ठीक है. वो देखो. अरे इवन अनिकेत agrees for $100 पेपाल. अरे इवन अभी उसका मैच है ना,
इंटर मायामी और अल नासर का भी है ना? भाई इंटर कौन देख Miami. भाई cares कौन about कौन that, देख man? उसमें भी उनका लॉस हो गया क्योंकि रोनाल्डो इंजर्ड है ना, बाहर हो गया वो तो। हाँ वही तो नुकसान है. Please not legitimize some random league, man. exactly. Anyway, that's I'll that's it from this time and मजा आया. नेक्स्ट स्ट्रीम में